और नहीं साला कोई ज्वाइन नहीं किया Mute yourself, Monu Kumar Chaurasia. Okay. So this is the second session we are starting now. And in this session, we will do the experiment number 2. Experiment number 1 we have already completed in the first session. Now experiment number 2, that is your writing skill. But before starting this writing skill, I just want to give you the writing skills topic, that what things you have to do in your assignment, your writing skills. Okay. So first of all, I will just like to say that what are the basic thing in a writing skill, that you should have a good, proper and correction spelling and punctuation. Next is your good reading comprehension. Next is your sentence and paragraph structure. Fourth one is the knowledge of different types of writing, because writing includes many types of things. And last one is the editing and rewriting. After writing something, we used to do editing, and after that we write in a correct form, that is our rewriting. So the 4 styles of writing, that are persuasive, narrative, explorative and descriptive. What do you mean by a persuasive? Persuasive का मतलब क्या होता है? What is the meaning of persuasive writing? Persuasive writing जो होता है, that means your general writing. Okay, that is a general writing. इसमें क्या होता है, हमारा action. We do some kind of action, जिसमें हम क्रिटिसिज्म करते हैं, किसी का रिव्यूइंग करते हैं, और editor you have seen from the editor decks, these editorials, these are of persuasive writing, advertisement, brochures and all those things. Okay. A persuasive writing. पर्सुएसिव राइटिंग्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू पॉइंट्स एनालाइज कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला कि पर्सुएसिव राइटिंग में हमारा ब्रोशूर्स रहता है, एडवर्टाइजमेंट्स रहता है. सो अब हमको क्या करना है, पर्सुएसिव राइटिंग. पर्सुएसिव राइटिंग से हमको रीडर्स को कन्विंस करना. सो यू कैन से दैट अ पर्सुएसिव राइटिंग इज एनी रिटन वर्क that tries to convince the reader of the writer's opinion.
Okay, there are certain techniques and strategies in a persuasive writing that makes the work different, and it is easy, and it is not enough to simply inform, that you have also to convince the reader that the way they are thinking of. So here when you start writing a persuasive, the basic things are persuasive are that share of information. Okay, then they are mostly related to your argumentative kind of essay with a resolution, और जो टोन हम लोग यूज करेंगे, द टोन दैट विल बी यूज, उसमें हमारा क्या होना चाहिए, कन्वर्सेशन। यही चीज जो है हमारा परसुएसिव राइटिंग को खास बनाता है। और परसुएसिव राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग फॉर्म, ओके, एंड इट इज ऑलवेज इन डिमांड because advertisement, copywriting, all these things are of persuasive form, because they try to convince the reader to become a customer of their company. ये जो लोगोस होता है, पैथोस होता है, persuasive writing में ही होता है। इथोस बोलते हैं ना, इथोस, do you know ethos? This is also from a Greek originated word, that is ethos. वो होता है character, that is some kind of character that is called ethos. Logos, logos क्या होता है, ये भी Greek words है, that means some logic. लोगो जो सो हम लोग नहीं दे सकते, that may have some logic, that is a logo. और pathos, pathos भी Greek word originated है, that means experience, that the author has appeal to emotion. ओके, तो यही सब चीज है जो हमारा persuasive writing को important करता है। और जब whenever we are writing some persuasive writing, so उसमें हमको कुछ कुछ चीज ध्यान में देना पड़ता है। That is your word choice. Second होता है questions. The questions cannot be whatever the reader will have intensively answers in their head if they can. So ask questions. Okay. The third one is write a clear statement. In statement जो होगा हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट। और नेक्स्ट वन इज दैट स्पीक डायरेक्टली टू द रीडर। हमारा डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। दिस इज आवर परसुएसिव राइटिंग। नेक्स्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाता है परसुएसिव राइटिंग के बाद, एग्जाम्पल। व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ परसुएसिव राइटिंग। सपोज हमको क्या खाने का मन है, आज हमको खाने का मन है something different. I just want to eat parathas. Okay, but my brother want pizza. So at that time क्या हो जाएगा, ब्रदर है, छोटा है, उसको सबको क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, घर में पराठा बना है, जस्ट ईट पराठा, कोई ये सब खाने का जरूरत नहीं, बाहर का खाना। तो ब्रदर हमको बोलेगा, दीदी चलो ना मम्मी पापा को बोलते हैं, वी जस्ट प्लान बिफोर, क्या आज हम लोग घर में खाएंगे नहीं, वी विल गो आउटसाइड एंड वी विल ईट, और घर में मंगा लेंगे, देन वी विल खाएंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, कन्विंस करना पड़ता है हम लोग मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके जब पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे कि नहीं बहुत दिन से रोटी रोटी सूखा सूखा रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, चलो कुछ बाहर चटपटा खाते हैं या घर पे मंगा लेते हैं। सो मम्मी क्या बोले, चलो दोनों बच्चों को इच्छा है, ठीक है खा ले, जिसमें हम लोग क्या हो, कन्विंस। तो सेम चीज यही है परसुएसिव राइटिंग का, दैट हैज अ स्टेप टू कन्विंस अदर्स। एंड हम लोग होते हैं दैट वी आर द पर्सन दैट डिसाइड हु विल। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कभी कभी बाहर खा लेना भी सही होता है ना, हर दिन घर का रूखा सूखा अच्छा नहीं लगता।
तो पॉइंट हमारा क्या है, घर में रूखा सूखा खाना मिलना, बाहर का खाना कभी कभी अच्छा है, रोज नहीं, कहाँ बोल रहे मम्मी, रोज नहीं खाना, कभी कभी। हमने इसको कन्विंस किया। तो यही होता है पर्सुएसिव राइटिंग। हमको ऐसा करना है जिससे हम किसी को कन्विंस अप कर सकते। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, पर्सुएसिव राइटिंग हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हम समझा दिए आप लोग को। राइटिंग स्किल्स में persuasive is the most important thing that always remind you that it plays a vital role in your writing skill. Now, हमारा राइटिंग स्किल्स, राइटिंग टेक्निक्स बहुत तरह का होता है. So your assignment is you have to write a notice, you have to write a formal letter, you have to write informal letter, you have to write a report. So these are the 4 assignments. The things is that you don't have to write these things in your copy. I have earlier shows the front page. You simply have to do that front page, one Xerox, put it in a plastic zip file, give an index, writing skills, first one notice, second one formal writing, third one informal writing, fifth one is your report writing. The question is of you. You have to write down the question, and then from the next page, you have to start writing. And the pages will be of A4 size, not ruled. समझ में आया असाइनमेंट क्या है, कैसे लिखना है, कैसे जमा करना? Have you got me? If not, then just tell me, I will clear you in Hindi. क्योंकि आप लोग को असाइनमेंट एक बार बता दीजिए मैम, एक बार हिंदी में बता दीजिए मैम। मींस व्हाइट पेपर, A4 तो व्हाइट ही ना होता है, नॉट रूल्ड माने क्या होता है, व्हाइट पेपर होता है ना, कि ब्लैक होगा पेपर? जो पहले हम दिखाए थे ना आप लोग को, कॉलेज का लोगो, फिर टेक्नो इंडिया का, झारखंड गवर्नमेंट का लोगो, उसमें रोल नंबर, ब्रांच, सब कुछ है, वो वाला पेपर एक तो प्रिंट आउट कर लोगे, उसी का एक जेरोक्स कर लेना, एक प्लास्टिक फाइल लोगे, वो पेपर को पहला होगा। नेक्स्ट पेपर में आप लोग अपना पेन से बॉक्सेस बनाइए, सीरियल नंबर 1 2 3 4, वो इंडेक्स पेपर आप लोग बना लीजिए, रिमार्क्स लिख लीजिए, टॉपिक लिखिए, सीरियल नंबर लिखिए, वो इंडेक्स बन गया 1 2 3 4, कितना से कितना पेज नंबर तक। ठीक है। उसके बाद A4 सब A4 साइज में होगा, व्हाइट कलर का। उसके बाद पहला है नोटिस। हाँ, और मैम जो आप बोली थी कि कॉपी क्लासमेट का लेना है, उसमें इसको नहीं लिखना है? आ रहे पहले ये असाइनमेंट दे रहे हैं, उसके बाद थियोरेटिकल में आ रहे हैं। मैम इंडेक्स पेपर तो मार्केट में भी अवेलेबल है, तो वो वाला यूज नहीं कर सकते हैं? क्या जरूरत है बेकार का पैसा खर्चा करके? नो नीड ना, 4 के लिए तो बनाना है, वो तो आप कर ही सकते हो स्किल से। यस मैम टॉपिक रिपीट कीजिए ना। टॉपिक है नोटिस राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग और आपका रिपोर्ट। क्वेश्चन आप लोग अपने से चूज कर सकते हैं। और इंडेक्स पेपर का लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, सब में इक्विवेलेंट मार्जिन होगा। ये नहीं कि लिख रहे तो पूरा लिख दे, लेफ्ट साइड में इतना मार्जिन दियो, राइट साइड में भी उतना ही दोगे, जगह छोड़ोगे, अपर में भी उतना ही छोड़ोगे, लोअर में भी उतना छोड़ोगे। और पेज नंबर जो है, बॉटम ऑफ द पेज विथ अ ब्लैक पेन यू हैव टू राइट 1 2, कोई सर्कल नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, जस्ट राइट 1 2 ब्लैक पेन से। ठीक है। और कुछ एनी क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? समझ में आ गया है असाइनमेंट क्या करना है? मैम टॉपिक एक बार और
क्या टॉपिक बोले, बोलो क्या टॉपिक, कौन सा बोले, कितना बार बोले? Notice form. Ma'am, notice, formal, informal और report. हाँ ठीक है, चलो अब जो क्लासमेट कॉपी यो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें क्या लिखना है ना? अब उसमें हमको क्या लिखना है? Now I'm just coming to that part. Just take the screenshot, okay? Ma'am, nothing is shown. Nothing is shown. Ma'am, Google only. Only Google. Okay, just wait. Yes, ma'am. Just wait. I don't know why it's happening. Just a minute, okay? I'm just stopping the sharing again. I'm just sharing. Yeah, now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Just let open the file. Just talking about it's taking too long time. Yeah, can you see? Yes, ma'am. Just wait. It's loading. Actually, it is just loading. I think net is slow. This is taking time.
see what happened to this thing. Just don't know what's happening here. Just wait. It's taking quite a long time to load all these things. What's happening? So I'm also not able to understand. Okay, anyhow, I will come to you when it will load. So first, let me explain what do you mean by the writing skills. Okay. So writing skill में हमने पहला क्या किया अपना persuasive writing. Persuasive writing. Persuasive writing. After that, what type of writing skill is there? 4 type of it I have given you already. Formal, informal, and this your notice and report. अब writing skills, how it is being important? पहला होता हमारा एक portfolio. How many of you have heard about this word portfolio? Portfolio क्या होता है? How many of you know what do you mean by a portfolio? Have you heard this word portfolio? No, Yes. ma'am. Portfolio देखना कोई भी बड़ा जब रहता है, there are some people who are having they are in a good post, एक छोटा सा pic दिया हुआ रहता है उसमें. Small kind of pic is there. A small introduction, a brief, very brief introduction of that person is given there. Okay, that is called a portfolio. What are his soft skill? What are his उसका क्या achievements है? उसमें portfolio बनाया जाता है. Small. This is the latest version. This portfolio. पहले होता था CV, resume, all those things. Now it is a portfolio. Now, ये हमारा experiment number 2. Please take the screenshot. That is your writing skills. To equip with necessary writing skills in order to face the corporate world. To state इसमें हमारा object how he has written. Please look with a black pen and blue pen. You have to write in this way. Second objective is to strengthen the writing skills of the students and help them document their programs in writing. Third one, to sharpen their communication skill towards writing a persuasive resume and effective job application letter. See, उसीलिए हमने persuasive writing के ऊपर special focus किया था, because persuasive writing ये हमारा basically हर जगह use करते हैं. So this is a persuasive. Please take the screenshot. Okay. Have you taken the screenshot? Yes, ma'am. Okay, now the introduction. Introduction part is that writing is a skill and which, like other skills, need to be learned with special efforts. Writing involves the complete participation and involvement of the writers in order to produce the best. Writing involves the transfer of thoughts into languages and also process where thinking is used for appropriate weight of words and sentences. Writing is an excellent way of stimulating mental development. It is writing which makes vague ideas become concrete. If we are thinking something, if we are telling the people, many of us, they will say, give in a writer. If you will say that I want a leave, that is a oral version. Everywhere it is not required. Sometimes you have to give an application in a written form. School में हमको simple हमने example that is school. We write an application to the principal through the class teacher that you are absent. You know that you will be not present tomorrow. You can just tell your class teacher, मैडम हम तो कल नहीं रहेंगे, शादी घर है, हम तो जा रहे हैं. टीचर क्या बोलेगा? Write an application and
give your parents sign, after that you have to submit. क्यों oral version में नहीं लिखा? Because oral version is not everywhere. अब वही चीज जब बड़े होते हो, when you walk in an office, आपके बॉस को आपने क्या बोला? सर कल थोड़ा आपको जरूरी है सर, मेरे घर में शादी का पार्टी है, I cannot attend. Your boss will say, please apply appropriate leave. Then you have to either write an email. अब email लिखोगे तो क्या लिखोगे? ऐसे ही जमा करना है in a proper format. एक proper format में लिखोगे. तो वही है, time to time the things changes, but a written format is always there. Your oral version is not always validated. आपका मुंह से बोला हुआ बात का कोई वैलिडेशन, कोई वैलिडिटी नहीं होता है. What is written on a pen and paper, that is only the validated document. So अब लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रॉपर वर्ड का नॉलेज होना चाहिए. कहाँ कौन सा पंचुएशन मार्क यूज करना, उसका हमको नॉलेज होना चाहिए. कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप, उसका हमको नॉलेज होना चाहिए. फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर करना, उसका नॉलेज होना चाहिए. So many things that affects an effective writing. कोई लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं, they can write nicely. बहुत जगह उनको एक्स्ट्रा काम भी मिलता है. They can do a very good documentation work. अब next हमारा क्या है? Next क्या है? Just see. Thinking is a prerequisite for writing, which enables the writer to generate ideas on the given topic by answering the fundamental questions like what is the purpose. कोई भी चीज लिखने के पहले हमसे क्या जरूरत होता है? पर्पस. किस पर्पस से हम लिख रहे हैं? So purpose is the main thing for anything we will write. And who are the audience? In the act of writing, the effort to express ideas and the constant use of eye, hand, and brain comprises a unique way of reinforcing learning and discovering new ways of expressing ideas. The close relationship between writing and thinking on one hand and reading and writing on the other hand. सोच के लिखना, छाप के लिखना बहुत अंतर है. किसी ने लिख के गया, उसको छाप दो, वो राइटिंग नहीं होता है. सोच के लिखा हुआ को राइटिंग स्किल होता है. There is a difference between copying and writing. लिखे तो हम भी है, कहाँ से लिखे? सोच के लिखे हो कि किसी का छाप के? That is the thing. So writing skills develop करना, that means you have a good vocabulary power. You have a very deep grip on English grammar. Then only your writing skill will be effective. The close relationship between writing and thinking is one hand, and reading and writing on the other hand is a vulnerable part of any language learning and skill acquiring program. All effective writers avoid ambiguity. Clear and legible writing is the bridge between the minds of the writer and the reader. Here the spelling of writer is correct or wrong? What is the spelling of a writer? Please tell me. WRTTER or WRI? Yeah. Single T, ma'am. Yes. So please be careful with your spelling. Here the spelling of writer is wrong. Now, as the students of engineering need good technical writing skills, and as it is the need of the hour. अभी आप engineering का degree ले ली. You will say, madam, कहीं नौकरी ही नहीं मिलता है? No, there is no validation of engineering degree we are getting. We are having engineering, madam, we have scored very good marks, but we are not getting job. क्यों नहीं मिल रहा job? You cannot crack the interviews. आपने इंटरव्यू के लिए क्रैक करना है, आपने सीखा ही नहीं. In the communication class, when I am interacting with you people are silence. बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं. The simple thing, when you will don't have any question answers, when I will ask any question answer, you will not answer. So at that time, at the end time,
when you will having a BTech degree, when you will going for an interview, examiner क्वेश्चन पूछेगा जवाब ही नहीं है. जब सीखने को उम्र था तब साइलेंट रहे, और जब बोलने का टर्म आया तब अब साइलेंट रहे कि कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है. Because whenever you have to crack an interview, you have to speak in English, you have to present yourself in a very confident way. Confident कब हो सकते हो? See, all people of here are not from an English background. Many of are from Hindi mediums. But still there is a time they can improve themselves in communication English. Either by communication with me in English, either having some queries, ask me any problem you are facing, any difficulties. Go through English newspaper, read any kind of editorial, English editorial every day. If you're not getting the words why they are, what is the meaning of that word, you can search in the dictionary. Everyone is having a smartphone with yourself. Things are easier to you, but you will not do. That is the main problem with you people, that you people will not do. You will see WhatsApp, you will see Facebook, you will play games. For that only the use of a smartphone is there. Parents have given you. Now, the three important factors are purpose, audience, and tone. The purpose of technical writing involves 3 stages. ये सबसे ज़्यादा important चीज होता है technical writing. You people will be having, जब तक एक अच्छा technical report writing नहीं करोगे project के लिए, कहीं validation नहीं होगा आपका. There will be no validation of you people in any kind of technical report writing wherever. That is a pre-writing, writing, and rewriting. I have already told. Now, in this unit, students are introduced to portfolio writing, resume writing, report writing, and e-correspondence. E-correspondence means different types of things that you are writing. Okay, please see the e-correspondence. Now, first session is that your resume writing. Just take a screenshot because you people have to make a resume. Second one is, okay, just make a resume only. Okay. There is no problem, just prepare a resume. What is a resume? CV पहले बोलते थे resume, अभी हो गया portfolio. Resume writing का क्या होता है? Difference between CV, that is curriculum vitae, and resume. Types of resumes, format and components. अब objective क्या होता है? तो empower students in writing skills in order to prepare prisoners. Okay. Persuasive resume. Persuasive writing, persuasive resume. The same thing is that you have to prepare a resume. You don't have to write this resume. This session you don't have to write because already I have given you the format of informal writing, formal writing, notice writing, and report writing. So, and the next one you make your resume. You just have to prepare your resume, make another plastic file for your resume. And your resume, you have to paste your pic, passport size pic. वो पासपोर्ट साइज पिक का जगह जो है फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, उसमें आपको अपना पिक डालना है. कलर फोटो यू हैव टू पेस्ट. और कलर फोटो ऐसा नहीं कि शादी का पार्टी का, इट शुड लुक लाइक अ ऑफिशियल. यू आर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जैसा होना चाहिए वो फोटो. शादी का पार्टी खाने गए हैं, वहीं से कहीं का कलर फोटो चिपका दिए, नो. different pose, different pouts of your lips. I just don't want to see. Take, please take the screenshot of these things. Experiment number 2. You have to write. Next. Okay. Next. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Next. Next. Sorry, this one will be not yours. Okay. Okay, just take me the screenshot of your attendance. So, in this class, आपको क्या क्या चीज मिला writing skills से? 5 things you have to do. First one is your resume making.
रिज्यूम मेकिंग में होगा आपका हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री में जाएगा. Engineering BTech pursuing. After that your polytechnic. After that your +2. If you have done, if you not, then don't do. Then matriculation. After that you have to include your achievements. After that your soft skills. Okay. Then how many members of your family, your own, and I hereby declare this sentence, your signature, your passport size pic to be attached, your contact number, your mail ID, and that should be in color. आपको उसका कलर प्रिंट आउट लेना है. Got it? Any मैम हम doubt? लोग मतलब सिस्टम पे बना के उसका प्रिंट आउट निकाल के अब फिर हम लोगों को इसमें डालना है ना. हाँ, प्लास्टिक फाइल, 2 प्लास्टिक फाइल बनेगा आपको. ठीक है मैम स्टिक फाइल. हाँ, स्टिक वाला फाइल, प्लास्टिक. ओके मैम. 2 पीसेस. ओके. कॉपी में क्या एक में ये. हाँ, एक में असाइनमेंट मैम राइटिंग स्किल्स का. यस मैम. और एक में आपका रिज्यूम. गॉट इट? यस मैम. ओके. थैंक यू ऑल ऑफ यू. मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम. या मैम और जो मैम आप बोले असाइनमेंट लिखना है, नोटिस, फॉर्मल लेटर, मैम ये हाँ. सबको हम लोगों को रूल और एक साइड व्हाइट में लिखना है या फिर बोथ व्हाइट? A4 साइज, A4 व्हाइट पेपर. ओके मैम. साइड नहीं, सिंगल साइड. बोथ साइड लिखने से क्या होता है ना, दूसरा साइड अजीब टाइप का दिखता है. हम सिंगल साइड लिखना है उसमें. यस. या क्वेश्चन नेक्स्ट, नित्यानंद. यस मैम, हम बोल रहे थे कि सैंपल मिलेगा क्या असाइनमेंट का? नहीं, अगर कोई बाद सैंपल में नहीं है. नो सैंपल. तब असाइनमेंट होगा क्या? नहीं मिठाई मैम, का दुकान है, जैसे मिठाई खाने ब्लैंक. आए हो, सैंपल दिखाइए भैया, अच्छा लगेगा तो खरीदेंगे. नहीं मैम, ब्लैंक वाला सैंपल भी तो होता नो है नो ना. नो ब्लैंक सैंपल. फॉर्मल, इनफॉर्मल, नो ब्लैंक सैंपल. दिस इज फॉर योर स्कूल टाइम. ओके. नो सैंपल विल बी प्रोवाइडेड. मैम वर्ड लिमिट. ओके मैम. वर्ड मैम लिमिट का वर्ड कुछ लिमिट ये इन नहीं सब है. में कितना नो रहना नो नो चाहिए? वर्ड लिमिट. नो वर्ड लिमिट. क्वेश्चन भी आपका है, वर्ड लिमिटेशन भी आपका है. तो मैम अभी आप 2 असाइनमेंट और 2 एक्सपेरिमेंट मतलब हम लोग का होमवर्क है. 2 असाइनमेंट नहीं है, एक असाइनमेंट है, एक रिज्यूम मेकिंग है, रिज्यूम करना है, और 2 एक्सपेरिमेंट. ठीक है? क्लियर? यस मैम. ओके. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम.